जय जगन्नाथ बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर is placed with its plane inclined at 30 degree to a uniform magnetic field of 4 into 10 to the power minus 4 Tesla. If a coil has 400 turns, then find the flux through the coil. अच्छा, flux कितना है वही पूछा है। तो गिवन है a square coil of a side, square coil, each of side 10 centimeter. So its area is 10 centimeter into 10 centimeter means 100 into 10 to the power minus 4 meter square means 10 to the power minus 2 meter square. Again given a number of turns is equal to 400 and magnetic field B is equal to 4 into 10 to the power minus 4 Tesla and angle theta is the 30 degree. No, angle theta is not 30 because if अगर a plane है and this is the aerial vector, but it gives the magnetic field is 30 degree to the plane. Magnetic field is 30 degree to the plane. Suppose ये वाला magnetic field है, इस plane को 30 डिग्री बनाया है, plane को 30 डिग्री, so aerial vector से कितना है 60 डिग्री, plane से aerial vector 90 डिग्री, plane से magnetic field 30 degree. So the angle between magnetic field and aerial vector is 60 degree, and theta is the angle between magnetic field B and aerial vector A. So theta is your 60 degree. अतः phi is equal to n B dot A means NBA cos of theta. N is 400, B is 4 into 10 to the power minus 4 into A is 10 into 10 to the 10 into minus 2, 10 to the power minus 2 into cos 60 degree. Then 16 into 10 to the power minus 4 0 0 0 0 कट गया and cos 60 is root 3 by 1 by 2. So answer is 8 into 10 to the power minus 4 Weber. 8 into 10 to the power minus 4 Weber. ठीक है। Again next question. ପିଲାମାନେ next question ହଉଛି a magnetic field of flux density 1 Weber per meter square acts normal to a 80 turn coil of 0.01 meter square. Find the EMF induced in it if this coil is removed from the field of 0.1 second. ठीक है। तो here given is magnetic field is 1 Weber per meter square acts normal to a 80 turn coil of कितना 0.01 meter square. ठीक है। So here given is n is equal to 80. ठीक है। और area is 0.01 meter square. So EMF is and given is
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है। पहले था 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव हुआ है। सो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज B2 minus B1, B2 is 0, B1 is 1 Weber per meter square, so means 1 Weber per meter square change in magnetic field. Again, E is equal to minus N del phi by del T minus N del phi is BA, again minus N B, and delta T is 0.1 second. 0.1 second means 0.1 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड इतना चेंज हुआ है। सो इसीलिए -80 इंटू 0.001 इंटू del B is -1 by delta T is 0.1. सो ये हमारा आंसर आएगा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट माइनस माइनस प्लस, ये 80 तो ये हो जाएगा 0.1 0.1 0.1 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो 8 वोल्ट। दिस इज द आंसर। लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। व्हेन ए करंट ऑफ 1 मिलिएम्पियर flows through a coil, then 5 microweber magnetic flux linkage through it, what is the self inductance? ठीक है, तो given is magnetic flux change, magnetic flux linkage through it is 5 microampere, 5 microweber, and current is 1 milliampere. So we know L is the flux per unit current, flux change per unit current, the 5 microweber per 1 milliampere. So 5 माइक्रो के जगह 10 to the power -6, 1 मिली के जगह 10 to the power -3 वेबर पर एम्पियर। सो ये हो जाएगा 5 into 10 to the power -3 हेनरी, वेबर पर एम्पियर इज हेनरी, तो 5 मिली हेनरी, 5 मिली हेनरी। लिख लो क्वेश्चन बच्चों। Question number 4. Calculate the induced EMF in a coil of 7 Henry inductance in which the current changes from 7 ampere to 3 ampere in 0.1 second. So, question is given that. Question number 4. A inductance is given 7 Henry. Current changes from 7 ampere to 3 ampere, means final is 3 ampere, initial is 7 ampere, so answer is -4 ampere. Change in current is -4 ampere, means current is decreasing. So and कितना समय में ये करंट चेंज हुआ है ना, 0.1 सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में 3 एम्पियर से, सॉरी 7 एम्पियर से घटकर 3 एम्पियर हो गया है। सो हियर EMF is given by minus, according to Lenz's law, is equal to minus del phi by del t, but phi is Li, L is a constant, so minus L की जगह पर 7 इंटू del I की जगह -4 बाय del t की जगह
0.1. So here is 28 by 0.1, that is 2.8, that is sorry 2.8, 0.1 मतलब 1/10, 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 280 वोल्ट, 280 वोल्ट। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट बच्चों, ए सिमिलर प्रॉब्लम, a magnetic flux of 4 into 10 to the power minus 4 vapor is linked with each turn of a 200 turn coil, while there is an electric current of 3 ampere in it. Find the self inductance of the coil. ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन क्या है? Number flux is, question number 5, flux is 4 into 10 to the power minus 4 Weber. Number of turn is 200. And current is 3 ampere. So L is 5 flux per current, but the flux is N pi. So flux linkage is the N pi. So L is 200 into 5 is 4 into 10 to the power minus 4, and current is 3 ampere. So answer is here 0.027 हेनरी, 0.027 हेनरी। ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन एक है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहे हैं, ये उसी तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.4 हेनरी is connected to a 16 volt battery. Calculate the rate of growth of current. Here given is question number 6. L is 0.4 Henry. EMF is 16 volt. पूछा गया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। सो वी नो E is equal to L di by dt. So di by dt is the rate of flow of current. Di by dt पूछा गया है, so di by dt is E by L is E is 16 by L is 0.4 से हो जाएगा कितना? 40। 0.4 मतलब 4/10, 10 ऊपर जाएगा 160, 160 पर 4 दैट इज 40 एम्पियर पर सेकेंड। रेट ऑफ करंट पूछा गया है, तो 40 एम्पियर पर सेकेंड लिख लो। प्रॉब्लम करेंगे मिटा देंगे, प्रॉब्लम करेंगे मिटा देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ए कॉइल हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 10 मिली हेनरी। सो गिवन इज L is equal to 10 मिली हेनरी, and what is the maximum magnitude of induced EMF in the inductor when a current I is equal to 0.1 sin 200t ampere is sent through it. So I given 0.1 sin 200t, पूछा गया है ई मार्क्स कितना है, पूछा गया है ई मार्क्स कितना है। सो वी नो ई इज इक्वल टू minus L di by dt by taking the magnitude E is equal to L di by dt, because ये मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम मतलब वो मैग्नीट्यूड लेंगे। So E is equal to L di by dt. Again L d by
dt. I is 0.1 sin 200t and L is 10 into 10 to the power minus 3. So आंसर हो जाएगा 10 into 10 to the power minus 3 L into derivative of this is 0.1 into 200 sin का हो जाएगा cos 200t. The EMF will be maximum when cos 200t is equal to 1. cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. अगर हम cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 यूज करेंगे सो ये में भी हमें मैक्सिमम मिलेगा. सो फॉर ई मैक्सिमम cos 200t will be 1. अतएव E max is equal to 10 into 10 to the power minus 3 into 0.1. That is 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3. Calculate the mutual inductance between two coils when a current of 2 ampere changes to 6 ampere in 2 seconds. ठीक है? And induce an EMF of 20 millivolt in the secondary coil. So, given that, question number 8, EMF is there 20 millivolt and current changes from 2 ampere to 6 ampere. So 6 minus 2 is equal to 4 ampere. कितने समय में? 2 सेकेंड में. We know E is equal to M di by dt. M is E by del I by del t. So E is 20 into 10 to the power minus 3. Del I by del t is 4 by 2 means 2. So ये हो जाएगा 10 into 10 to the power minus 3. 10 into 10 to the minus 3 हेनरी. So हो जाएगा 10 मिली हेनरी. 10 मिली हेनरी. लिख लो. Question number 9. The magnetic flux through a coil perpendicular to the plane is varying according to the relation phi is equal to 5t square plus 4t square plus 2t plus minus 5 over. Calculate the induced current through the coil at t is equal to 2 seconds if the resistance of the coil is 5 ohm. तो ठीक है, it gives phi is question number 9. Phi is 5t square plus 4t square plus of 2t minus of 5 over. So EMF is d phi by dt. So ये हो जाएगा 10t plus 8t. सॉरी F5t क्यू है, F5t क्यू. सो ये हो जाएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2 प्लस 2 volt. EMF at t is equal to t second is 15 into 4 2 का स्क्वायर प्लस 8 into 2 16 plus 2 15 for the 60 plus 18. So ये हो जाएगा 78 volt and given resistance is 5 ohm. So I is E by R is 78 by 5. So here is 15.6 ampere. 15.6 ampere लिख लो. नेक्स्ट बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन.
two metallic circular loops of Faraday R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coinciding. Find the mutual inductance between them. Assuming R1 is very bigger than R2. So, taking two coils, this is R1 and another coil, this is R2. This is R1. R1 is very big. So, let पहले कंडक्टर में आई करंट फ्लो करता है. पहले कंडक्टर में आई करंट फ्लो करता है. So, first conductor produces magnetic field B is equal to mu naught I by 2 pi r. Sorry, mu naught I by 2 r. एक सर्कुलर कंडक्टर में करंट जाने से उसके सेंटर में प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है V is equal to mu naught I by 2 r. Again, this magnetic field is the cause of magnetic flux linkage in the coil 2. So, flux in secondary coil, in coil 2, in inner coil is given by phi is equal to VA. B is the magnetic field produced by the coil 1. So, B is mu naught I by 2R. 1. Again, area is the flux is the secondary flux is the phi is the flux in second coil 2. So phi here area is phi r2 square. So ये हो जाएगा mu 0 phi I r2 का स्क्वायर by 2r1. Then the mutual inductance between the two coils is M is equal to phi by I. So phi is again phi for I. अगर phi for I हम लिखेंगे तो हो जाएगा mu 0 pi r2 का स्क्वायर by 2r1. ये रहा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल 2 with respect to coil 1 whose radius is R1. ठीक है, तो लिख लो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. नेक्स्ट क्लास से हम अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे. ठीक है, पहले अल्टरनेटिंग करंट बीट बाय बीट पढ़ेंगे, उसके बाद उसका भी न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. जय जगन्नाथ.